Hello everyone! So we are finally done. We've completed a third book in our 52 weeks, 52 books challenge, and the book that I've reread, I've completed once again is How to Win Friends and Influence People by Mr. Dale Carnegie. And I must tell you that this book by far is the best book that I've ever read on influencing and relationships. Now, it doesn't matter if you are a businessman, a working professional, you are a student, you are in some kind of a job, especially if you are in a relationship, you must read this book without fail. Because this book has the ability to make you a master in the art of influencing. Now, just in case if you wish to purchase this book, I've pasted a link in the description. You can click on the link and buy this book from Amazon. Now, I have made notes of some very special learnings just for you. So let's quickly get to our learnings. Alright, so let's begin with one of the most important and critical strategies of influencing. That is, never ever criticize. Any fool can criticize, condemn and complain. But wise people ask questions because when you criticize, you wound a person's precious pride. You hurt a sense of importance. You arouse resentment. You are in direct conflict with the ego of that person. So, what's the better way? Instead, just ask, could there have been a better way? ये करने का कुछ इससे अच्छा रास्ता क्या लगता है आपको हो सकता था? That is how you make a person think. Change his thought, change his behavior towards a particular task, towards a particular activity, right? Towards a particular concept. Next, the deepest desire in any human is the desire to be important and the desire to be appreciated. So what you have to do is consciously find out ways in which you can appreciate people. Constantly find out ways in how you can make someone feel important. Now, this is an amazing strategy of influencing, which I have been practicing for a long time. And let me tell you, it really works. Moving on, let's check this out. Yes, again, we are coming to one of the most critical strategies of influencing, and that is इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है. लेट मी रिपीट वंस अगेन. इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है. People are not interested in you, they are not interested in me, they are simply interested in themselves. So stop trying to be interesting and start trying to be interested. Okay? फिर से दोहराऊं. इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है. Next. Now, this is somewhat a part of neuro-linguistic programming. Control actions and you will control the feeling. तो अक्सर हमें अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना जब मुश्किल होता है तो एनएलपी हमें सिखाती है कि हमें अपने एक्शन को कंट्रोल करना है, यानी हमारे बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करके हम अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं. अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ एनएलपी विच मे बी आई विल एक्सप्लेन यू इन मच डीपर एंड बेटर वे विद मोर एग्जाम्पल्स इन द डेज टू कम. अब ये देखो यहाँ पे ये छूट गया. दैट ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया ना, दैट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी, दे आर सिंपली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स. हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? व्हाट प्रूफ डू वी हैव थ्रू विच वी कैन से कि भाई ये जो इन्होंने यहाँ पे बताया कि इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग. यू कैन मेक दिस आउट सिंपली बाय अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. जब भी हम फोटो निकालते हैं ना अपना किसी ग्रुप के साथ में, तो हम उस फोटो को ये अच्छा फोटो है कब बोलते हैं? जब उसमें हम अच्छे दिखाई दे रहे हो, ना कि दूसरे, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इन एनी पिक्चर इज हाउ यू आर लुकिंग इन दैट पिक्चर, एंड इफ यू आर लुकिंग गुड इन दैट पिक्चर यू टर्म इट एज भाई ये फोटो बहुत अच्छी आई है, राइट? ओके, मूविंग ऑन. A man convinced against his will is of the same opinion still. Extremely important in any relationship, especially in your personal relationships. You make sure that whenever you want to convince someone, you've got to make that person feel that that is his own thought, okay? That is his own belief. Because if you try to superimpose your belief, your thought on someone else, वो सामने तो आपको बोल देगा कि हाँ भाई ठीक है मैं कर लूँगा, हो जाएगा. But internally, he will be of the same opinion still. He will not be convinced. So, हमें आर्ग्यूमेंट
नहीं करना है, हमें अग्रीमेंट करने की कोशिश करनी है. बिकॉज 9 out of 10 times an argument ends with both the contestants more firmly convinced than ever that they are absolutely right. Okay? So adult learning principle क्या कहती है? Men must be taught as if you taught them not, and things unknown proposed as things forgot. इसका क्या मतलब है? भाई किसी भी ग्रोन अप इंसान को ना अच्छा नहीं लगता कि कोई उसको आके कुछ सिखाए, है ना, कुछ समझाए, होशियारी समझाए. ओके, ये बताए कि भाई मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं. किसी को भी पसंद नहीं आता है, राइट? सो you have to teach them as if you are not teaching them but sharing something which they already know but probably they must have forgot. Okay, moving on. Never say in any conflict that you are wrong. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझना. नेवर से, कोई कभी भी किसी के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा हो जाता है ना, तो कभी ये नहीं कहना दैट यू आर रॉन्ग. इंस्टेड द गोल्डन फ्रेज इज आई मे बी रॉन्ग. हो सकता है कि मैं गलत हूं. लेट्स एग्जामाइन द फैक्ट्स, लेट्स रीलुक एट द फैक्ट्स. हो सकता है कि मेरी गलती हो, एक बार फैक्ट्स फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, राइट? दैट्स हाउ यू ऑलवेज अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट. ओके, नेक्स्ट, moving on, the magic phrase to stop all arguments, to strongly influence someone. क्या है भाई magic phrase? I don't blame you at all for feeling as you do, because if I were in your place, I would have felt the same, probably worse. I could have never been as stronger, as patient, as tolerant as you are. तो अक्सर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ. मैं लोगों से ये कहता हूँ दैट भाई जो आप फील कर रहे हो ना वो बहुत ही सही फील कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं भी आपकी जगह पे होता तो मैं भी एग्जैक्टली ऐसा ही फील करता. दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स दैट वी यूजुअली यूज इन आवर ट्रेनिंग्स टू टीच आवर पार्टिसिपेंट्स. भाई मैं अगर आपकी जगह होता ना तो मैं भी एग्जैक्टली ऐसा फील करता. बट सच बात बताऊं तो आप तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि शायद मैं इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता जितने अच्छे से इस सिचुएशन में आपने रिस्पॉन्ड किया है. This is the magic phrase. Okay? Now, again, this is extremely important. Have a look at this. Merely stating the truth isn't enough. See, influencing के लिए ना ज़रूरी है कि आपका इंटेंशन अंदर से अच्छा हो. केवल अच्छा ही नहीं, सच्चा हो. But, as a matter of fact, merely stating the truth is not enough. The truth has to be made vivid, interesting and dramatic so that you can use the truth to influence someone. Okay? Moving on, one of the most finest and one of my most favorite learnings of this book, how to criticize. भाई अगर criticize करना पड़ जाए, करना ही पड़ जाए तो कैसे criticize करेंगे? Rule number 1, never criticize in public. Always only appreciate in public. Criticize अगर करना भी है तो उसको private में criticize करना, जिसको भी आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं. और क्रिटिसाइज करने का तरीका क्या है? चटनी सैंडविच अप्रोच. ओके, चटनी सैंडविच अप्रोच. देखो, अब आप इस बात से अग्री करेंगे कि जब आप एक चटनी सैंडविच खाते हैं तो उसमें स्वाद किसका होता है? ब्रेड का होता है या चटनी का? चटनी का होता है. सही सोचा आपने. लेकिन क्या केवल चटनी खा सकते हैं आप बिना ब्रेड के? खाते हैं हम चटनी? नहीं ना, ब्रेड लगा कर खाते हैं. उसी प्रकार से असली जो चेंज आता है ना वो सही है, क्रिटिसिज्म सही आता है, लेकिन केवल क्रिटिसिज्म दे के काम नहीं बनेगा आपका. आपको ऊपर और नीचे ना क्या कहते हैं, अप्रिसिएशन का स्लाइस लगाना पड़ेगा. ब्रेड जो होता है ना अप्रिसिएशन का, वो लगाना पड़ेगा क्रिटिसाइज करते समय ऊपर और नीचे की ओर. यानी शुरुआत आप करेंगे अप्रिसिएशन से, ओके, और एंड आप करेंगे अप्रिसिएशन से, और बीच में आप करेंगे क्रिटिसाइज, या सामने वाले को वो करेक्टिव एक्शन बताएंगे जो आप उसको बताना चाहते हैं. ओके, टॉक अबाउट योर मिस्टेक्स फर्स्ट, देन टॉक अबाउट द ऑपोजिट पर्सन, हाउ ही इज हैंडलिंग इट इन अ मच बेटर वे एज कंपेयर टू यू. ओके, एंड देन यू स्लिप अ क्वेश्चन साइलेंटली. डोंट यू थिंक इट वुड हैव बीन वाइजर इफ, अगर ये इस तरह से करते तो क्या आपको लगता है और बेहतर हो पाता? That's how you do it. Okay? You'll see yourself influencing every single person coming in your contact
if you use this approach, and you'll see a lot of people adopting that corrective behavior जो आप उनको instruction देते हैं ना चीजें change करने की, अपना behavior change करने की. You will see a lot of people doing that if you follow the chutney sandwich approach. Okay? शुरुआत में आप appreciate करेंगे, समझेंगे कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, ये हो सकता है. अगली बार अगर ये गलती ना दोहरानी हो तो क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? And then finally, I'm so sure that you will do it right the next time. I totally believe you. इस प्रकार की चीज़ें हैं, इस प्रकार की बातें करके आप पूरी तरह से उस चटनी के ऊपर और नीचे अप्रिसिएशन का ब्रेड लगा सकते हैं. Okay? Now, finally, before we end, learn this. This is very important for every single one of you watching the video. No one likes to take orders. Okay? So instead, what you can do, अगर किसी से कुछ काम करवाना है ना तो क्या करवाना होगा? Instead of giving orders, ask questions. सवाल पूछना होगा. Okay? सवाल पूछना होगा. Instead of directly giving someone an instruction, you have to put a question mark in front of the statement. इससे होता क्या है? The opposite person जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जिसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, he feels more in control. Okay? He feels more in control. And that is the reason it doesn't conflict with his ego. And before we close this, one final learning that I usually and consciously try to implement across all my interactions, that is never sow the seed of a thought in any mind unless the mind is made fertile. Okay? First, you have to make the mind fertile to accept the seed of thought. तो किसी को भी कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है देने से पहले या किसी को कोई काम करवाने से पहले उसके अंदर आपको वो भावना निर्माण करनी होगी, वो यकीन निर्माण करवाना होगा कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ या जो ये सामने वाला मुझे बोल रहा है ना करने, ये सही है, ये अच्छी चीज़ है और ये करने से मैं और अच्छा फील करूँगा. राइट? सो फर्स्ट यू हैव टू मेक द माइंड ऑफ द ऑपोजिट पर्सन फर्टाइल बिफोर यू सो दैट सीड ऑफ थॉट. आप कितना भी अच्छा आपका थॉट क्यों ना हो, बट अगर आपने वो गलत समय पर और उस माइंड में लगाया जिसकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है, जिसको फर्टाइल नहीं बनाया गया उस थॉट को एक्सेप्ट करने के लिए, let me tell you however good your thought is. So these were some of my learnings that I'd made notes of just for you. But as I said, you must have a copy of your own. So just in case, if you plan to buy a copy of How to Win Friends and Influence People, check out the link in the description, click on the link and buy the book from Amazon. Now, the next book that I'm going to read for you is Decisive by Chip and Dan Heath, which primarily talks about how humans make decisions and most importantly, how you can influence anybody's decision and choices. So stay tuned for more updates.